across the country to a national level as well. So ODOP, I am hoping that now in the coming times, with the support of the state governments, we will find that through this, be it our farmers and their fruits, their vegetables, be it their primary processing, the aim of this government to double the farmers' income. I hope that what we had visualized when we started in 2014, that the farmer should not be restricted only to growing the produce, but he must value add, and with value addition increase his income as well. सो मेरे ख्याल से इस स्कीम के साथ अब किसान अपनी फसल में मूल्य वृद्धि कर सकता है, सिर्फ फसल उगाने का काम नहीं, लेकिन उगा के उस पे वैल्यू एडिशन करके अपनी आमदन को बढ़ा सकता है। और ये स्टेट और सेंटर मिलके जो 60-40 शेयर होगा, 60% स्टेट का, 60% सेंटर का, 40% स्टेट का, हिमालयन और हिली एरियाज के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए 90% सेंटर देगी, 10% स्टेट डालेगी, और हर डिस्ट्रिक्ट का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP जो स्टेट जिनका फैसला करेंगे, और फिर उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक क्लस्टर बना के उस क्लस्टर में जौन सा प्रोडक्ट और जौन सा प्रोड्यूस स्टेट डिसाइड करेगी, उसको प्रमोट करने के लिए उसमें वैल्यू एडिशन करके, उसकी टेक्नोलॉजी, स्किलिंग, नो हाउ देके, उसके छोटे छोटे प्रोसेसिंग प्लांट्स जो हैं उनको अपग्रेड करके मंत्रालय की तरफ से 10 लाख रुपए तक की ग्रांट देके, ये जो छोटे लोकल एरिया में हैं ये पूरे अपने राज्य में फैले, पूरे देश में फैले, और आखिर में दुनिया तक ये जा सकें। एक मैं कह सकती हूँ एक सुनहरा दिन माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, जो ये 25 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस देश में भरे हुए हैं। अब 2 लाख ऐसे एंटरप्राइजेस को हमारे मंत्रालय की तरफ से सपोर्ट दी जाएगी। सो पहली स्कीम ये वाली है। इसी के साथ आप सारे जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी टॉप स्कीम थी, टमाटो अनियन पोटैटो की जो स्कीम थी, आज मुझे खुशी है कि ये टॉप स्कीम को प्रधानमंत्री जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कि जैसे हमने देखा कि कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन था लेकिन किसानों की फसल आ गई, उन फसलों की मंडी तक ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट तक ट्रांसपोर्टेशन, मंडी नहीं खुले उनके वो बेच नहीं सके, तो काफ़ी सारी ऐसी जो मुश्किलें किसानों को आई। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे हालात भगवान करे आने वाले समय में ना ही आए, लेकिन हमने अपनी टॉप स्कीम को अब टॉप से उसको टोटल तक ले गए हैं, जहाँ सिर्फ टमाटो अनियन पोटैटो के लिए नहीं, लेकिन कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल के लिए ये 6 महीने के लिए पायलट स्कीम है, और जो कामयाब हो तो इसको फिर पूरे देश में आगे भी लागू किया जाएगा। कोई भी फसल, किसान हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई प्रोसेसर हो, कोई रिटेलर हो, कोई भी हो, जो किसानों से खरीद करके उसको जहाँ पे बेचा जाता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन का और उधर स्टोरेज का मंत्रालय की तरफ से आपको 50% सब्सिडी दी जाएगी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर स्टोरेज। तो ये मैं समझती हूँ कि हमारे किसानों के लिए और हमारे रिटेलर्स के लिए और हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव, कि अब किसान की फसल, ये ऐसे हालात नहीं होंगे कि उनकी फसल आ गई लेकिन मंडी बंद है और वो उसका कुछ करे नहीं। अब कहीं पे वो अपनी फसल को स्टोर करना चाहेंगे तो उनको हमारे मंत्रालय की तरफ से 50% इधर से उनको पैसे दिए जाएंगे उस खर्चे के लिए, और जो वो ट्रांसपोर्ट करके कहीं तक लेके जाना है किसी पोर्ट तक एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी उनको 50% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मंत्रालय की तरफ से। और बहुत ही सिंपल तरीके से ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कोई परमिशंस नहीं लेनी। जब आपका सारा कुछ हो जाएगा तो आपको अपने कागज अपलोड करने हैं और आपकी रीइंबर्समेंट हो जाएगी। सो टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स and to ensure that they don't face any loss of income and a seamless supply from production to the consumer, to ensure that consumers do not face any problems. Today, a new platform which is going to be totally digitally operated with the latest IT technology, and people will upload their papers, and in a stipulated short amount of time, they will be reimbursed 50% of their transportation and 50% of their storage costs for any fruits and vegetables
So from top, we are now going to total, which is going to ensure that farmers do not suffer anymore. All kinds of crops and all kind of fruits and vegetables are going to be uh, are eligible for this. All submissions of claims will all be online in a stipulated time frame in a very simple and easy manner. I'm happy to say that since this scheme was announced, which is the formal announcement is today, but as people got to know about it, we have already got more than 100 applications who have already registered on this online portal. So you have to register in advance, and once you have done your transportation and your storage, you have to upload your documents and you will get reimbursed at 50% of the cost. So I'm happy to say that 100 applicants have already applied and the scheme is just being launched today. Our um, in, third announcement of today from the ministry is that we are going to be starting online skill training classes, especially for scheduled caste and scheduled tribe entrepreneurs. आप सब जानते ही हैं कि जो सबसे पिछड़े वर्ग होते हैं और सबसे कमज़ोर वर्ग होते हैं, इनके लिए हमारी सरकार ने तरह तरह के उपराले किए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी और जैसे सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स में एससीज और एसटीज के लिए खास अलग से एक अपने बजट में रखा जाता है इनको असिस्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में थोड़े पैसे कैपिटल इंटेंसिव है, पैसों का खर्चा ज़्यादा होता है, जिस करके शायद हमारे एससी एसटी भाई लोग जिस तरह का फ़ायदा उठा सकते हैं उस तरह नहीं उठा सके हैं, जिसके लिए आप बिल्कुल फ्री हमारे मंत्रालय की तरफ से एससी एसटी भाई बहनों के लिए ये स्किल ट्रेनिंग क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। ई ट्रेनिंग होएगी, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रेनिंग आप अपने फ़ोन पे भी डाउनलोड करके अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमने 41 ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज हमने पिन पॉइंट किए हैं जिस करके एससी एसटी को रोजगार मिल सकता है, जैसे वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। तो इस कोर्सेज को हम लोग बना के ऑनलाइन इनको करके ट्रेनिंग आपको देके और फिर आपको सर्टिफिकेट भी दे के कि आपको इस चीज़ में ट्रेनिंग मिल गई है, और अपने मंत्रालय की तरफ से जो आप अपने पैरों में खड़े होकर अपना काम खुद शुरू करना चाहते हैं तो ये इसकी भी आपको हमारे मंत्रालय की तरफ से मदद दी जाएगी। ये अगले 2 महीने में ये 41 कोर्सेज सारे, जैसे कोई बेकिंग करना चाहता है, कोई अचार, कोई पिकल, कोई टेक्नीशियन, कोई कोई घी मक्खन बनाना चाहता है, कोई दूध की फैक्ट्री में या किसी और फैक्ट्री में काम करना चाहता है, तो आपको वो सारी ट्रेनिंग दी जाएंगी जैसे आप किसी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप एडजस्ट हो सकते हैं। एक कोर्स का तकरीबन 3 महीने का कोर्स होगा और उसके बाद आपकी असेसमेंट होगी और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे आपको रोजगार के you will be trained with the certificate in your hand and which will make you more employable. So especially for our SCs, our STs, absolutely free training classes via the electronic media will be launched, which will be in 2 months. It will be active. It will be a 3-month course, and there are 41 sectors in which you can get trained, whether it is you want to be an entrepreneur or you want to go and join any food processing industry, one of these 41 courses, or you can do more than one of them. They're all totally free of cost, and this will enable you to be employable in any food processing industry. I'm also happy to say that with the ongoing projects of the Ministry of Food Processing Industry, where we have almost 900 projects across the country, these will all provide you an opportunity to get employed over here. And with 2 lakh more in the micro formalization sector, this Pradhan Mantri FME scheme with 2 lakh more enterprises which are going to be coming up. So it provides a vast canvas of opportunities for our SC and ST brothers and sisters to get training via the ministry and then go and look for these opportunities. So I hope that with the launch of our FME scheme, with our top to total for all fruits and vegetables, and with the skill training, in these times, this ministry is working towards ensuring employability. I'm hoping that with this scheme, we will be
creating through FME scheme employment opportunities for over 9 lakh people, through our skilling for lakhs more, and through our top two total, millions of farmers are going to make use of this and provide an opportunity to the farmers, to the entrepreneurs, to the industry, and to the retailers, and most importantly, bring down the wastage to ensure that transportation and storage facilities are available. I'm happy to say that the ministry has worked over the last 6 years under the dynamic leadership of the Honorable Prime Minister to ensure that infrastructure is created at the farm gate level for preservation and processing of all our fruits and vegetables and all kinds of perishables. I'm happy to say that in the last 6 years, with the initiative of the government, huge steps have been taken to ensure processing capabilities. And if I would just mention a few things, if we talk in terms of capacity of cold storage creation, I'm happy to say that in the last 6 years, through our operational 18 mega food parks and through the 196 cold chains that we have created a capacity of 7.72 lakh metric tons of cold storage. If we talk of preservation and processing capacities, this is over 100 lakh metric tons of capacity for processing. And if we talk that through these cold storages and the preservation capacities created, approximately what is the value of the perishables which are getting processed? It is almost 25,000 crores worth of perishables which were earlier getting wasted, but now they are getting processed. And I'm also happy to add that through these operational units of ours, we have generated over 8 lakhs of direct and indirect employment and benefited more than 20 lakh farmers. So I would like to add here that these are ongoing. These are only the ones which are already operational. As you know that every month, more cold chains, more units, more mega food parks are becoming operational. And by the time all our 900 units are operational, we would have added processing capacity of agro produce almost to the tune of 50,000 crores with our existing units, which are all in the processing which are all in the pipeline of being completed. So with all these initiatives of the Honorable Prime Minister, I'm happy to say that a study done by NABCONS showed that in the local area, wherever our units have come up, they have also impacted for the farmer's income to increase because his produce gets a better value. It has also brought down the wastage. And through this infrastructure, it has also increased the revenue of the state besides creating job employments. And if we look at the average wastage which has come down sector-wise, I'm happy to say that if we look at the dairy sector, the improvement through our units that have come down and through the push given through the Ministry of Food Processing to this sector of creating this cold chain infrastructure through our mega food park, through our mini food park, through our backward forward linkages, through our unit scheme, through our cold chain, through our various schemes across, we have improved the utilization in the dairy sector by 85%. The wastage of fisheries has come down by 70%. Fruits and vegetables preservation has gone up by 79%. So in overall improvement, I would say in the wastage is almost above 70% in case of fisheries and dairy, and almost 50% in the case of fruits and vegetables. So together with the announcement of these new schemes, ये नई स्कीमों के साथ मेरे ख्याल से जहां हमने अपने पिछले प्रोजेक्ट से वेस्टेज घटाने में बहुत बड़ा काम किया है, आपने देखा है कि हमारे देश के कोने कोने में एक कोल्ड चेन ग्रिड बनाने की हमने कोशिश करी है। अपने मेगा फूड पार्क के राही मेगा फूड पार्क्स में जो यूनिट्स है उनकी तरफ से, कोल्ड चेन स्कीम की तरफ से, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज स्कीम की तरफ से, सो पूरे देश में एक कोल्ड चेन ग्रिड बना के जिससे जो हमारे फलों, सब्जियों की, दूध की,
मछली की, इन सब चीज़ों की जो बर्बादी होती थी, वेस्टेज होती थी, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के आने से हमारी नैबकॉन्स की स्टडी ने बताया है कि कैसे 70 से 80% वेस्टेज, अब उसकी वेस्टेज की जगह वो नुकसान नहीं होता बल्कि उसका मूल्य मिलता है, क्योंकि उसकी प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग की कैपेसिटी हो गई है। तो इससे सीधा सीधा जो बेनिफिट होता है वो हमारे किसानों को होता है और वो हमारे कंज्यूमर्स को होता है, और एडिशनल इनकम की जनरेशन स्टेट के लिए और किसानों के लिए होती है। तो इन तीनों स्कीम, जो नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, इनसे मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मंत्रालय का जो निशाना रहा है कि देश की वेस्टेज को घटाना है, किसान की आय को दुगना करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और रेवेन्यू को बढ़ाना है, ये तीनों चीज़ों को एक आगे स्टेप में लेके जाने के लिए एक बहुत ही ये एक ऐतिहासिक कदम है। और एक बार फिर मैं बधाई देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने उस सेक्टर के बारे सोचा है जो घर में बैठ के परिवार के 4 जने मिल के अपनी आमदन, अपनी रोजगार बनाने के लिए छोटे छोटे घरों में जो काम करते हैं, जिनको कोई मदद नहीं देता, जिनको कोई सहायता नहीं देता, जिनको कोई टेक्नोलॉजी नो हाउ नहीं देता, अब 10,000 करोड़ इनके ऊपर जब खर्चा जाएगा और इनको इनके पास तक पहुंच करके इनको क्रेडिट पैसे भी दिए जाएंगे, टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी, नो हाउ भी दिया जाएगा और मार्केट में बेचने के लिए इनकी मदद भी की जाएगी, तो मुझे उम्मीद है ये 2 लाख एंटरप्राइजेस जब अपग्रेड होकर फॉर्मल सेक्टर में आएंगे तो ये एक रूरल देहाती हिंदुस्तान भारत के लिए और गांव में बसे लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल होगी। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for launching these initiatives today and for explaining the schemes so minutely with finer details. And as you said, this will be a game changer for all those who are involved in food processing industry and also generate huge employment for our farmers in the country. Thank you, ma'am. We now have several people. We have now, ma'am, a short video which has been prepared on PM FME scheme. I would request all of us to please watch this film now. आज फिर से लेट। वो भाभी बंसीलाल के यहाँ 500 बॉटल का ऑर्डर देने गई थी ना, इसीलिए लेट हो गई। क्योंकि कंपनी को आगे भी तो बढ़ाना है ना। 500 बॉटल, दिन चढ़ गया, अभी भी सपने देख रही है। और तेरे भैया ने ना आंगन में मशीन नहीं लगा रखी है अचार की। तो मशीन लग जाएगी, देखते जाओ हमारी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँचती है। अरे ये कंपनियाँ हमारी तरह आंगन में 10-15 किलो अचार नहीं डाला करते हैं। क्या भाभी, ये आंगन वांगन भूल जाओ, हम फैक्ट्री डालेंगे। मैंने तो नाम भी सोच रखा है, पूजा पिकल्स लिमिटेड। पिकल्स यानी अचार, दुनिया का सबसे टेस्टी अचार। सही है ना? पी से पूजा और पी से पिकल। भाभी? हाँ, और एस से सन की साक्षी। भाभी, हमारा ऑफिस होगा, मशीनें होंगी और आप पूजा पिकल्स की मालकिन। 10वीं पास, अनपढ़ मालकिन। भाई ये कंपनी में अपनी ना अपने बस करनी। हम कंपनी भी बनाएंगे, रजिस्टर भी करेंगे और जीएसटी भी भरेंगे। और पैसा वो क्या आम के पेड़ पे उगेगा? और ये लोन वोन का चक्कर मेरी समझ से तो बाहर है। भाभी आप चिंता मत करो, पैसा, मशीन, ट्रेनिंग, पैकिंग सब हो जाएगी। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का तोड़ है मेरे पास। सरकार की एक ऐसी योजना आई है जिसके तहत अब हमारे जैसे छोटे बिजनेस वाले भी अपने बड़े सपनों को साकार कर सकते हैं। देखना भाभी, एक दिन आपका ये अचार पूरी दुनिया खाएगी और कहेगी वाह। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? पर एक शर्त है। शर्त? हम अपनी कंपनी का नाम रखेंगे पूजा एंड साक्षी फूड कंपनी। बहुत बड़ा नाम नहीं रख दिया। चलो अब अचार। अचार पैक कर दे दीदी। हाँ शुक्ला जी, वो अचार वाला डब्बा लखनऊ जाएगा, चटनी वाला नहीं, तो थोड़ा ध्यान से। जी दीदी। क्यों भाभी,
सरकारी एफएमई स्कीम की वजह से हो गया ना हमारा सपना सच। अब पूरा देश चख रहा है आपके हाथों का स्वाद। हाँ, वो बात तो है। Thank you so much. We have several people in the country who are connected to us today on the virtual platform. Let's hear what they have to say about this FME scheme. First of all, we have Ms. Renu Mahanta. She is a proprietor of an industry in Nagaon in Assam. Let's have her. Renu ji. नमस्कार। Namaskar. नमस्कार। मैं रेनू महतो आसाम की नौगांव जिले की रहने वाली हूँ। मैं अभी सभी को हार्दिक प्रणाम करती हूँ। मैं पूरी दिल से भारत की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज शॉर्ट एफएमई स्वागत करती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह का स्कीम लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो ये एफएमई जो लॉन्च हो रहा है, ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग बहुत मदद करेगा। इन जो मार्केट जो प्रॉब्लम हो रहा है, मार्केटिंग लोन के लिए बहुत मदद हो जाएगा। इस स्कीम के जरिए इन लोगों का सपनों का उड़ान भर जाएगा। मतलब इन लोगों को बहुत मदद हो जाएगा। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू रेनू जी, आपके व्यूज के लिए, आपके आइडियाज के लिए और आपके कमेंट्स के लिए। अब नाउ वी हैव गॉट मिस रंजीना। शी इज असिस्टेंट डायरेक्टर मिशन कोऑर्डिनेटर कुदम्बश्री मिशन एर्नाकुलम इन केरला। Good afternoon, honorable dignitaries. Actually, we appreciate this honorable ministry for this wonderful program. Especially in Kerala, majority of these enterprises are this micro enterprises, and we face a lot of problems. So, with this inception at the starting of the program, we are expecting a lot through these programs. Majority of our programs are this high price in the raw materials. Then we have to compete with the branded monopolist and all. So we expect that this program will have a unique impact and a great impact on our all schemes. Thank you. Thank you, Ranjina ji, for your views and for enlightening us. We now have Mrs. Rama Devi Kanigati. She is president of Aliyap in Hyderabad, Telangana. Mrs. Rama Devi, please. Are we able to get her online? Can you? In case the connection is not there, can we move on to the next one? We have Mr. Uminder Dutt. He is Executive Director, Kheti Virasat Mission, Faridkot in Punjab. नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरसिमरत और बादल जी के मार्गदर्शन में जो ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गांव में छोटे उद्यमों को, किसान, महिला, युवा, आप उसको जो सपोर्ट करने की जो बात की है, छोटे उद्योगों को, तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसान आत्मनिर्भर होगा तो गांव आत्मनिर्भर होगा, गांव आत्मनिर्भर से तो बनेगा भारत आत्मनिर्भर। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के सेक्टर में भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत लोग कर रहे हैं, तो क्या फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से वही उसकी चीज प्रोसेसिंग बन जाए, गांव का किसान उगाए, गांव की महिला या युवा वो उसको प्रोसेस करे और गांव के आसपास ही बेचा जाए, वही हो जाए। बेचने के लिए दूर भी जा सकता है वो, लेकिन इससे गांव में रोजगार बनेगा, गांव में समृद्धि आएगी, गांव में पैसा आएगा। और ये जो कोविड-19 जैसी जो कभी आपदा आ सकती है, आती है जो ऐसी,
तो उसमें जो लोगों को बहुत पलायन करना पड़ता है वो भी नहीं होगा, गांव के लोग गांव में रहेंगे। और मुझे लगता है ये बहुत प्रशंसनीय बात है। हरसिमरत कौर बादल जी को मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा कि ये इनिशिएटिव हुआ है, और इस आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से हम अंत्योदय की ओर भी बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल जो गरीब व्यक्ति है गांव का, ये उसको भी समृद्ध बनाएगा, और इसके माध्यम से गांव के अंदर महिला सशक्तिकरण, पोषण, स्वास्थ्य, हम कितने मुद्दों को एक ही समय में एड्रेस कर सकते हैं। मेरी पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय हरसिमरत कौर बादल जी को हार्दिक बधाई। उमिंदर जी, थैंक यू सो मच। जिस तरह से आपने बताया भारत सरकार के इनिशिएटिव से ग्राउंड लेवल पे जो हेल्प हो रही है लोगों की, थैंक यू सो मच। We can now go back to Mrs. Rama Devi in case she has been connected online. Mrs. Rama Devi Kanigeti is President Aliyap from Hyderabad, Telangana. I think she is not able to be connected. But thank you so much. Thanks to everybody who has provided their feedback about the scheme. After the Minister ma'am has explained the scheme, people have given their feedback, and these have been important learnings and inputs which we all get enriched by such free and frank opinion. I now invite the Honorable Minister of State, Shri Rameswar Teli ji, who has joined us on this virtual platform from Assam. Please, sir, if you can address us now. नमस्कार भाई और बहनों, मुझे हर्ष है आपको बताते हुए कि हमारी मंत्रालय की दोनों स्कीम, जिनका नाम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइज और एक्सटेंडेड ऑपरेशन ग्रीन है, जो हमारा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसान भाइयों एवं लघु उद्यमों को सीधा फायदा पहुंचाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर तकरीबन 55 लाख लोगों की ग्रामीण इलाकों में रोजगार उपलब्ध करवाता है। विशेषकर वर्तमान के कोविड महामारी के दौर में जो लोग अपने घर और गांव को लौट गए हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उनके लिए आशा के किरण है। हमारा लक्ष्य है अनऑर्गेनाइज्ड यूनिट को मुख्य धारा से जोड़ना है। इस योजना में बेनिफिशियरी को 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। हम बेनिफिशियरी को डीपीआर बनाने, बैंक लोन सैंक्शन करवाने तथा एफएसआई, उद्योग, आधार, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने में भी सहायता प्रदान करेंगे। इस योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूह एवं ऑपरेटिव पीएफओ को भी ऋण मुहैया करवाया जाएगा और उनका मार्गदर्शन किया जा सकेगा, जिसके वे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मुख्य धारा से जुड़ सके। इसके द्वारा फल सब्जियों के क्लस्टर में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज एवं उत्पादों की मार्केटिंग, वेंडिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। इस योजना उत्तर पूर्व अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं एक्सपेंशन डिस्ट्रिक्ट फोकस करेगी। इस योजना सुजम खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की नवीनीकरण पर बल देगी एवं ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहयोगी होगी। उत्तर पूर्व अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए विख्यात है। पाइनएप्पल, बनाना, हल्दी, अदरक, ऑरेंज, बड़ी इलायची, काला चावल एवं बम्बू यहाँ बहुत
मात्रा में उपलब्ध है, किंतु उत्तर पूर्व के कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण काफी कम है। इस योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रसंस्करण को बढ़ावा देगी एवं कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के अभाव में होने वाले नुकसान को भी कम करने में मददगार साबित होगी। हमारी दूसरी योजना के अंतर्गत अब सभी प्रकार के फल सब्जियों की सम्मिलित किया गया है, जिसके द्वारा दाम गिरने एवं अत्यधिक उपज हो जाने की स्थिति में किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत फल एवं सब्जी के भंडारण एवं परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। हम जल्द ही ST/SC भाइयों एवं बहनों के लिए 41 ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं। इससे जल्द रोजगार के अवसर में मदद मिलेगी। हमारे मंत्रालय की योजनाएं रोजगार सृजन, कृषि उत्पादन के नुकसान को कम करने, सुजम इकाइयों के नवीनीकरण एवं किसानों की उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने में अहम भूमिका निर्वाह करेगी। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for enlightening us with your views. I am sure the industry will benefit a lot, and also the users and the farmers and the people who want to take benefit of such schemes. The floor is now open for our media friends. We can have a short question answer session, and I will request our secretary, ma'am, who is present here, to take questions from the media. The link has been shared with the media persons. The first I have is Miss Madhvi from Economic Times. Madhvi, are you online? Yes, please. You're not audible. If you can our present here to take questions from the media. The link has been shared with the media persons. The first I have is Miss Madhvi from Economic Times. Madhvi, are you online? Yes, please. You're not audible. I will request our present here to take questions from the media. The link has been shared with the media persons. The first I have is Miss Madhvi from the Economic Times. Madhvi, are you online? Yes, please. You're not audible. Present here to take questions from the media. The link has been shared with the media persons. The first I have is Miss Madhvi. I think we are not able to connect with Madhvi. We'll try to go back to her in case we have time after this. Now we have Miss Lakshmi Devi from PTI. Lakshmi ji, are you able to hear us? Yes, thank you. Whoever is connected can speak up and that person can say their name. That would be easier. Madhvi, can you hear us? I can see Madhvi on the screen, but she can't hear us. Who is connected, please say your name and start speaking. Lakshmi ji, please unmute yourself.
Madhu ji, please unmute yourself. Announce that whoever is audible may say their name, whoever is connected, and ask their question, and then you can just take whoever is connected. Yeah, if you can go to the next one. Do we have Danish from Z Business online? Mr. Danish, are you online? I think there is some connectivity issue here, perhaps. We have Meenakshi from Business Line. Check, everybody is having a problem getting connected. Is my voice audible? Yes, you are audible. Please ask. Yeah. Hello. Please go ahead and ask your question. We can hear you. Your question. Please go ahead. Please go ahead and ask your question. Hello, can you hear me? Yes. Please go ahead. How many? I just had one question on how many clusters, ma'am, are going to be identified across districts? Because there's going to be, as you mentioned, there's going to be a cluster approach. So, ma'am, across districts, how many clusters will be identified? Also, ma'am, in your speech, you were referring to some numbers on the kind of steps that have been taken to reduce wastage. Ma'am, could you dwell a little more on those numbers, ma'am? Thanks. Those were my two questions. Okay. You want to take more questions? Or No, ma'am, you can respond first, ma'am. So, where the question of clusters is concerned, we have taken, as you know, that this 10,000 crores is for 2 lakh units that we are going to be supporting. So, we have taken the number of units in the unorganized sector in the state as well as the agri-produce and taken out an average. So, every state has a number of projects which will be sanctioned to them. It has been divided equally amongst the states, and depending on the number of projects that have got sanctioned, for example, I'm in Punjab, so Punjab has got approximately 63,000 units which will be funded under this scheme, and it's up to Punjab state government to decide how many districts, how many projects they want to put up, because it's one district ODOP, one district, one product. So Punjab government decides that out of their 23 districts, which are do they want to promote something in every district, or do they want to just pick up 5 products and put all those 60,000 units in that product? So it's entirely, the flexibility is with the states as to what they want to promote. Maybe 1 year they want to promote 5 things, and the next year they want to promote 5 more. So how they go about it, the flexibility is with the states. And as far as your second question, which you asked about, the reduction in wastage, as you know that the ministry had done a study through CIFET in 2010, which had showed us that when we did the repeat study in 2015, that which was across 117 agroclimatic zones and across 100 odd districts, and I think there were 46 kind of produce which were studied, and it showed that perishables worth almost 1 lakh crores were being wasted every year due to lack of infrastructure, lack of transportation, and a host of other reasons. So on the basis of that, I'm happy to say that when I was giving figures about, what through our mega food parks and through our cold chains, I mean, just to give you an example of pre-2014 and post-2014, and I'm only talking about those units of ours which are already operational. I'm not even talking about those
800 units of ours, which every year and every month they are going to get operational. So I was just giving a comparison. For example, through my ministry, if the cold storage capacity creation through our schemes had been 1.91 lakh metric tons, today in the last 6 years we have grounded projects which have cold chain storage capacity worth 7.72. So this is an increase of almost 300% from pre 2014 to post 2014 till date. If we talk about preservation and processing capacity, if before 2014 and all those years, the earlier governments had created capacity through the ministry of about 14 lakh metric tons, we have in 6 years created over 100 lakh metric tons in 6 years compared to what it was 14 lakh, pre. If we talk about the value of the agro produce which is being handled in these preservation, processing, cold chain, if the value was about 3,500 crores before 2017, today it's 25,000 crores. So this is an increase of over 600%. So this is what I mean to say, that under the dynamic leadership of the Honorable Prime Minister, each ministry has worked not towards on paper of sanctioning of due projects, but actually on the ground level of grounding of these projects. And as a result, the study that we had done through NABCONs in what the overall reduction of wastage in various sectors is. So this study that NABCONs has done, it shows us that, just through our cold chains, for example, we've taken the cold chains, which is from farm gate right till retail. Through the cold chain, if we look at the improvement in the dairy sector, it is almost 85% once our cold chain has come up there. If we look in the fisheries sector, the improvement of wastage is over 70%. If we look in the fruits and vegetables, it is also 79, which is almost 80%. So wherever our cold chain has come up, the NABCON study shows that there is reduction in wastage and the improvement of the perishables being preserved rather than wastage towards 70-80%. Thank you so much, ma'am. Now we have a next question from Vibha from Tribune. Vibha, can you please put your question now? I am being heard. Good afternoon. My question is, what kind of employment figures are you expecting to generate from these three schemes, particularly in the states of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, and the Union Territories of Jammu, Kashmir, Ladakh, and Chandigarh? And also, what kind of products and the produce that you are hoping to promote from these schemes? The minister is from Punjab, so I'm sure she would be able to tell about Punjab and Haryana in a more detailed way. So, especially Punjab and Haryana and Himachal Pradesh. Thank you. Said that in Punjab, through this scheme, we will have over 63,000 units which have been sanctioned from my ministry. Now, it all depends on the proactiveness of the Punjab government as to how soon they tell me which district, which produce, how soon and how much of help they give us in identifying these micro enterprises to upgrade them. So as you know that it is a centrally sponsored scheme and the onus is all on the state governments as to how proactive they are. So through the FME scheme, we are hoping that further employment generation of almost 9 lakh people will be created, and this could go up many-fold. This is what we are hoping. But of course, I would like to add over here that in any scheme which is centrally sponsored, it all depends on the proactiveness of the state government. You're well aware that I have sanctioned 3 mega food parks. You are well aware that the Ladowal mega food park in Ludhiana has been the only out of my 40 mega food parks where the units have become functional, but the state government over the last 2 years has not even been able to ensure that the cold store starts working by ensuring that the transformer is put over there and electricity supply is given. The IQF, which is to preserve the fruits and vegetables,
The IQF has not even, the tendering process has not been done in over 2 years. So like I said, it all depends on the proactiveness of the government. Certain state governments are so proactive that they follow up with the ministry and have their project sanctioned. And there are certain states like my own where I have made 3 visits to the mega food park and got no help even till date. So unfortunately, our hands are tied. I can keep giving the grants and sanctioning as many units as I can, but unless the state government comes forward, our hands are tied. We cannot achieve the optimum results that are possible. So I hope that the state governments realize that the food processing sector helps the farmer, helps the consumer, and generates employment as well as revenue for the state. And I hope they give some more attention. I believe in Punjab, they don't even have a food processing ministry. And when I talk to the minister in charge, he often tells me कि मेरे को तो अफसर भी नहीं हैगा, एक भी फाइल नहीं आई है. And I can only say in the last 6 years, I've not even been approached even once by the food processing minister of Punjab for anything for Punjab. So I think that says it all. Would you like to add anything to the question asked? Thank you, ma'am. We now have Harpreet from PTC News. Harpreet ji, can you please be online now and ask your question? हरसिमरत जी से है। हरसिमरत जी, मेरा सवाल जो था वैसे ऑलमोस्ट आपने उसको पंजाब के किसानों को लेके था। मेरा एक सवाल और भी है मैम। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनमें कागजी कार्रवाई बहुत होती है, जिसकी वजह से स्कीम में दम तोड़ जाती है। हमारा किसान कागजी कार्रवाई से बहुत भागता है। आपने एक सेकंड स्कीम बताई, जो बहुत अच्छी स्कीम बताई कि आप 50% स्टोरेज के चार्जेस देंगे, 50% अगर आप अपनी फसल कहीं दूर लेके जाते हो तो उसके भी देंगे। इज इट पॉसिबल कि इसमें लेस कागजी कार्रवाई हो? पंजाब का किसान हमेशा ही इसलिए बहुत सारी स्कीमों का फायदा नहीं उठा पाता क्योंकि बहुत सारी कागजी कार्रवाई उसमें होती है, तो वो वहां से भाग जाता है कि मुझे इस में पढ़ना ही नहीं, चाहे मेरे को नुकसान हो जाए। ठीक बोला कि जिस सेक्टर को या जिस बेनिफिशियरी को हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो है किसान, जो है माइक्रो यूनिट्स, ये इनकी पढ़ाई लिखाई हो या इनका एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब ये उतना नहीं होता जितना अर्बन एरियाज़ में होता है। और इस करके वो करना भी चाहें, वो उद्यमी भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं और काम को आगे बढ़ाना चाहते भी हैं, लेकिन पीछे रह जाते हैं क्योंकि इनको कोई क्रेडिट नहीं देता, इनको कोई फंड्स नहीं मुहैया कराता, और बी इनको दिल्ली की स्कीमों का लाभ कैसे लेना है, कागज़ कैसे भरना है, इन चीज़ों से वो पीछे रह जाते हैं। जिस करके जो हमारी टॉप टू टोटल जो ऑपरेशन ग्रीन्स की स्कीम है, जो किसी भी फल सब्जी के लिए कोई भी किसान अब इसका फ़ायदा उठा सकता है कि उसके एरिया में उसको लगता है मुझे मंडी में सही रेट नहीं मिल रहा है, लेकिन पंजाब में बैठा किसान, मुझे लगता है अब जैसे मैं जहाँ पे मुक्तसर एरिया में यहाँ हमारा कीनू उगता है, जो कीनू का भाव इधर बठिंडे ज़िले में होता है या पंजाब में होता है, बेंगलोर में जाके हमको कई गुना ज़्यादा अच्छा प्राइस मिलता है। लेकिन बेंगलोर तक की दूरी, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, किसान ये सब कैसे कर सकता है? लेकिन जे कर ले तो उसको कीमत बहुत, उसका मुनाफा कई गुना ज़्यादा होता है। जिस करके बिल्कुल सिंपल तरीके से उसको सिर्फ ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करना है कि इस महीने में मेरा इतनी क्वांटिटी का मेरा कीनू मैं इस जगह तक लेके जाऊंगा, उसका इतना किलोमीटर दूरी, जितनी भी दूरी होगी जहाँ पे मुझे स्टोर करना, उसने अपने आप को सिर्फ रजिस्टर करना है कि मैं ये कीनू को यहाँ से पंजाब से मैं बेंगलोर तक लेके जा रहा हूँ। और जब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, उसी ऑनलाइन तरीके में उसने सिर्फ अपने कागज़ अपलोड करने हैं कि ये मेरे ट्रांसपोर्टेशन का इतना किलोमीटर का ये खर्चा और वहाँ पे स्टोरेज का मेरा ये खर्चा है, और उसको ऑनलाइन ही उसके अकाउंट में 50% सब्सिडी ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि रेट्स ऑलरेडी फिक्स्ड हैं कि पर किलोमीटर आपको जो रेट मिलेगा और स्टोरेज का जो रेट मिलेगा वो कंफर्म्ड है, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। आपको सिर्फ ऑनलाइन अपना कागज़ अपलोड करना है और आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे।
Uh, Thank you so much, ma'am. Now we move on to Dr. Subodh Jindal, who will be giving us a perspective on how the industry will benefit from today's scheme in terms of capital subsidy benefits and manufacturing and also employment generation. Dr. Jindal, please. Thank you, Mr. Jain. Good afternoon, everyone. On behalf of food processing industry, I wish to congratulate the Honorable Minister of Food Processing Industries, Srimati Harsimrat Kaur Badal ji, and Honorable Minister of State for Food Processing Industry, Shri Rameswar Teli ji, for making these strenuous efforts to conceptualize these schemes and work with the government at the level of the Honorable Prime Minister and the Honorable Finance Minister to give these schemes a concrete shape and their budgetary allocation. We are also grateful to the Secretary, Ministry of Food Processing Industry, Shrimati Pushpa Subramanian ji, and her team for efficiently formalizing this entire drive. Friends, these schemes launched today, and as explained by our Honorable Minister, have a very strong bearing on energizing food processing at the grassroots. Many times we do work for and think of provisions for strengthening the other sectors of the industry, but unless we focus on the grassroots, we are short of the real development that is required. These schemes will improve the level of processing, save perishable agri-produce, promote self-help groups, farmer processor organizations and cooperatives. So this is kind of which we call the last mile bridging from post-harvest, from the farm gate to preserving and securing the natural produce to be useful into final secondary processing to make consumer products later on. So this is a way to give value to the entire chain and give the consumer nutritious food and good products all the year round. Naturally, this has a great impact on the farm revenue also. प्रिय उद्योग में संलग्न भाइयों और बहनों और हमारी नई पीढ़ी के युवा उद्यमी भाइयों, मैं ये कहना चाहूंगा आपको ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन की तरफ से कि ये एक बहुत सुनहरा मौका है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर श्रीमती बादल जी, इन्होंने बहुत कर्मठता से इन योजनाओं को साकार रूप दिया है। मेरा निवेदन है कि आप सब इनको अच्छी तरह समझिए। इन योजनाओं के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उनका पूरा आंकलन करके और उनका इस्तेमाल कीजिए, उनका प्रयोग कीजिए। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि हमारी एसोसिएशन के माध्यम से जो भी आप लोगों को इसमें मदद मिल सकती होगी, जो लिंकेजेस मिल सकते होंगे, जो मेंटरशिप और गाइडेंस हम जगह जगह पर इंडस्ट्री क्लस्टर्स को दे सकते होंगे, हम उसके लिए पूर्णतः समर्पित हैं और हम आपको इसके लिए पूरा सहयोग देंगे। एक और बात कहनी चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा समय है हमारे देश के लिए जो हम कृषि क्षेत्र में वैल्यू एडिशन करके नए प्रोडक्ट्स बनाएं, क्योंकि पूरी दुनिया आज न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी की तरफ देख रही है और इस क्षेत्र का भारत के पास बहुत बड़ा इतिहास और बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे आयुर्वेदिक से भी जुड़े हुए हैं और कृषि के माध्यम से प्रोसेसिंग होके ये प्रोडक्ट सारी दुनिया में जा सकते हैं। तो ये अब हमारी नई पीढ़ी की अपनी कटिबद्धता है कि जो वो हम उसको जितना उजागर कर सकें और उसके
द्वारा इस सारे योजनाओं को कार्यान्वित कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय हमारे मंत्री जी से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, अवसर दिया आप सबके साथ ये व्यूज को साझा करने के लिए, और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट तेली जी जो हमेशा आमंत्रित करते हैं इंडस्ट्री को कि आकर बातचीत करें और नए नए सुझाव दें। So with all these views, I wish all the entrepreneurs rapid progress in their ventures and would like to request everyone to give the best possible applause to the Ministry of Food Processing Industries for doing this wonderful work in such difficult times. Thank you very much. Thank you, Dr. Jindal, for giving us with an industry perspective on today's initiatives. I will now request our Secretary Ma'am to kindly summarize the key takeaways from today's launch in 2-3 minutes, ma'am. Thank you. Greetings to all the participants in this momentous launch of a set of new initiatives from the Ministry of Food Processing, Government of India, under the AtmaNirbharBharat initiatives. Today is a watershed because, as we have heard Minister elaborating in detail all the three initiatives of formalizing micro enterprises, of extending Operation Greens initiatives to all the perishables for the next 6 months, as well as launch of an online skilling module in this sector. And our Minister of State has also added his insights into the program, particularly with respect to the northeastern states. The main takeaway of this watershed moment today is that both the Ministry of Food Processing Industries as well as Government of India and the state governments today have a slew of funded initiatives that will enhance the outreach of the governments to the farmers, to the small food processors, to ensure that they get better credit, they get better capacity building support from government, that they get better technology, better assistance for packaging their food produce, and finally and most importantly, better branding and better marketing. So what do we see after a few years of this program? Some of the questions, very few of them could be press people could be connected today, related to how exactly do we ensure that clusters are identified, that there is less problem for the beneficiaries, potential beneficiaries to access these schemes. How is it that we plan for it? I would like to mention that every district in the country is proposed to be reached out under the scheme of the formalization of micro enterprises. The state governments, as Madam had said, will identify clusters. It could be more than one cluster of, let us say, pineapple in the state of Meghalaya, or it could be one cluster that could move across districts. So at the end of series of initiatives that we will support, that we will give under the scheme, what we will see at the end of it is new products packaged from each of these districts that will be available in the shelves of the retail chains, that will be available for the consumers to actually recognize and give support to. So we would find better marketing as the biggest outcome, and in the process improved incomes to the processors, to the producers, and to the farmers. Doubling farmers' income, I think, would be one of the outcomes if this scheme goes on the way it is designed. Uh, on the issue of Operation Greens that is getting extended to all the other crops in the next 6 months, here again, the ease of access to this support is something that will be the USP of the scheme. We already have an online portal set up, and we have received more than 100 registrations from about 20 states from the application.
applicants to access the scheme. So in a matter of 3 weeks, the ministry was able to actually get an IT portal going and get applications received by the ministry from the small farmers, FPOs, or processors. The third scheme of online skilling also is again our effort to make our services available seamlessly to the potential beneficiaries. Currently, the ministry gives funding for skilling infrastructure, and there's a tectonic shift today by this announcement. All the 41 training modules that we have will be available online to the interested persons and in about 9 languages as of now. So all of these modules can be accessed free of cost by the trainees. So I think the whole message that the ministry and government would like to give on this launch, on the occasion of this launch, is that we are getting closer to those who need government support, and we are making it available to them in a seamless and IT platforms, because even the FME scheme will be run on a robust portal where each of the 1 lakh, 2 lakh micro units that we would be upgrading will get access to our system and get funding, training, and credit support through this online system. A last point I would like to mention is that this entire initiative of AtmaNirbharBharat in the food processing sector is today built on a wave of liberalization of the agriculture sector. So whether it is the amendments to the Essential Commodities Act, which removes the limits for stocking, or the Contract Farming Act, which is now permissible across the country, or independence from the AMC regulations in every corner of this country. I think these are the whole paradigm shift in the ecosystem will again help the sector to grow and realize its potential to its maximum. And we will certainly see increasing manufacturing units set up, increasing incomes to farmers, and perhaps even in the longer run, increasing exports from the micro segment. Thank you for all of you joining this webinar. Thank you so much, ma'am. And as you very rightly said, this has been a historic day for the food processing industry sector in the country. As we come to a close, I wish to thank all the participants, but first of all, our Honorable Minister for Food Processing Industries, Srimati Harsimrat Kaur Badal ma'am, without whose support and initiative, she has been a prime mover and a soul behind this all the initiatives. Thank you so much, ma'am. Our special thanks to also the Minister of State, Shri Rameswar Teli ji, Secretary ma'am, industry association, industry stakeholders, our media friends, state mission directors, and all the stakeholders who made this program a success. Thank you so much. Thank you all the media.